Welcome friends to the newcamera.com channel, and today we are talking about best lenses for Sony A6100 camera. Now before we begin, do subscribe to our channel for all latest updates, news and rumors. तो आज की इस गाइड में हम बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताएंगे, बहुत ही शॉर्ट टर्म में, विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम. आई एम जस्ट गोइंग टू गाइड यू which lens you should pick for your Sony A6100 camera. Now I am dividing this guide in two parts. Okay, the first part is for still shooter. If you want to capture some good still images from your camera, and if somehow you are not satisfied with the quality of kit lens, तब मैं यहाँ पे आपको गाइड करूंगा that which lens you should pick for what purpose. And the second part of the video, I will be addressing the needs of the YouTubers, those who are just started their career with A6100 कैमरा, जिन्हें लेंस की ज़रूरत है, जो YouTube की वीडियोस बनाते हैं, उनकी ज़रूरतों को हम सेकेंड पार्ट में अटेंड करते हैं. और अगर आप हाइब्रिड शूटर, आपको स्टिल भी शूट करना, आपको वीडियोस भी बनाने हैं, तो आप पूरी गाइड देखो, तब आपको पूरी डिटेल्स पता चल जाएगा कि विच लेंस यू शुड पिक. एंड दिस इज अ सुपर शॉर्ट गाइड. आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच ऑफ टाइम, सो लेट्स बिगिन द गाइड. जस्ट आफ्टर गेटिंग द Sony A6100 camera with a kit lens, now my recommendation is that you should pick 50mm f1.8 lens, and this is a dedicated portrait lens. इससे आपकी portrait पिक्चर्स बहुत ही अच्छे आनी है, बहुत ही शार्प लेंस है, बैकग्राउंड ब्लर बहुत ही अच्छी क्रिएट करता है. So the second lens I recommend after having a kit lens with this camera is 50mm f1.8 prime. और बिगनिंग में जैसे मैंने कहा था, मैं स्टिल शूटर्स को एड्रेस करूंगा, बट अगर आप यूट्यूबर भी हो तो यू मस्ट हैव दिस लेंस. दिस इज द परफेक्ट लेंस टू क्रिएट वीडियोज इन अ रूम और ऑफिस. और अगर आप स्टिल शूटर हो तो आपके पास 50mm f1.8 लेंस रहनी ही चाहिए, क्योंकि दिस इज द बेस्ट पोर्ट्रेट लेंस फॉर बिगनियर्स, द 50mm f1.8. ठीक है. आप उसके बाद इफ यू हैव मोर मनी देन यू कैन look for more third party options. We have ZS lenses, we have Sigma 56mm f1.4, but those lenses come at good price. Okay, now next I will be talking about the best zoom lens for your A6100 camera. आपके पास already A6100 camera है with a kit lens. Now you are planning to get a good zoom lens for your camera. Good zoom lens की demands काफ़ी ज़्यादा रहती हैं. कई लोग मुझसे पूछते हैं, there are a lot of people who ask me questions that सर मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए जूम लेंस लेना है, सर मुझे नेचर फोटोग्राफी के लिए जूम लेंस लेना है, आप बजट में बताओ विच लेंस शुड आई पिक. सो in general I recommend them 55 to 210 mm zoom lens. The 55 to 210 mm is a beginner zoom lens. A beginner zoom lens है, and this is a decent lens. It do capture sharp images and also have built-in image stabilization system, so it's a decent lens for startup. Now if you have bit more budget, अगर आपके पास और बजट है, अगर आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ट्राई करनी है, अगर आपको एक बहुत ही अच्छी जूम लेंस चाहिए शार्पनेस के साथ, बिल्ट इन ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ, then this is the best lens to start your career with. Okay, अगर आपके पास बजट है, आप 55 to 210 से ज़्यादा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो, then my recommendation is you should move with the 70 to 350 mm lens. If you are interested in wildlife photography, if you are interested in nature photography, if you want to have a zoom lens with you, then of course the 70 to 350 mm is a decent, is a good choice. But if you have bit less budget, आपके पास थोड़ा बजट लेस है, then of course 55 to 210 mm is the best option to begin with. Okay, now let's move on with all-rounder lens. Sometimes we also call this lens a traveler lens. So I will be talking about 18 to 135 mm lens. 80 to 135 mm एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मेट है. कैनन में आपको 18 टू 135 mm की लेंस मिलती है. वी हैव 18 टू 140 mm लेंस इन निकॉन. After Canon, Nikon, we have the Sony 18 to 135 mm. Now one of the best thing, अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हो, अगर आपको एक ऑल इन वन लेंस चाहिए, देन 18 to 135 इज अ रियली गुड लेंस. सोनी के 18 to 135 mm को लेंस को यूज करा है मैंने, बहुत ही इंप्रेस हुआ हूँ. एंड इसकी जो टेलीफोटो क्लोजअप पिक्स आती है बहुत ही शार्प आती है कंपेयर टू कैनन निकॉन राइवल्स, कंपेयर टू कैनन 135 mm लेंस और निकॉन 18 टू 140 mm लेंस. हालांकि कैनन ने अभी अपनी लेंस को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड कर लिया है, उन्होंने रिसेंटली निकाली है. बट या दिस लेंस इज जस्ट ऑप्शन आउट ऑफ दिस ग्रुप. और इफ यू वांट अ ऑल इन वन लेंस, इफ यू आर इवेंट ऑफ वेडिंग फोटोग्राफर एंड वांट टू हैव ऑल इन वन लेंस विथ यू ऑल द टाइम,
then of course 18 to 135 will do the job. Okay, this is a perfect lens. Either if you are traveler, आप traveler हो, आप wedding event shoot करते हो, but you need a handy lens that you should keep all the time. आपको light की यूज नहीं उतनी फेस करनी, आप डे लाइट इवेंट शूट कर रहे हो, then of course 80 to 135 is the best pick out of the bunch. ठीक है, this is the best lens. This is the best lens you have with you if you want a all-rounder lens. Now let's move on. Now the best micro lens for A6100 users is 30mm f3.5. If you want to shoot micro images with your camera, with the A6100 camera, then the best lens is Sony 30mm f3.5. Now if you have more budget, then you can go with the full frame 50mm micro lens, but my recommendation is you should begin with the Sony 30mm f3.5 micro lens. Now what issue you may face with this lens, आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती है इस लेंस के साथ जब आप यूज कर रहे हो, खास करके A6100 कैमरा या A6400 कैमरे के साथ. The lens doesn't have OSS inside it. ये माइक्रो लेंस में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, साथ में आपके कैमरे में भी नहीं है. तो इससे होगा क्या, क्योंकि जब हम माइक्रो खींचते हैं बहुत ही फाइन डिटेल्स पे हमें वर्क करना पड़ता है, तो थोड़ा सा भी हैंड से इस पूरे पिक्चर को बिगाड़ सकता है. तो आपके लेंस में इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, एंड A6100 कैमरे में IBIS नहीं है, सो यू नीड अ ट्राइपॉड विथ यू व्हेन यू आर शूटिंग माइक्रो इमेजेस. अगर लाइट की कंडीशन बहुत अच्छी है, आप डे लाइट माइक्रो वर्क शूट कर रहे हो और आपका मान लीजिए जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही अच्छी लाइट कंडीशन में बैठा हुआ है, देन यू कैन यूज दिस कैमरा हैंड हेल्ड वाइल हैविंग फास्टर शटर स्पीड्स. अगर आप फास्ट शटर स्पीड पे वर्क करते हो तब बहुत हद तक आपकी जो ब्लर इमेज की जो आने की प्रोबेबिलिटी है बहुत कम होते जाएगी. But when working with the micro lenses, I generally recommend photographers to use tripod. Without having tripod, you won't get perfect images from your camera. Now मैं यूट्यूबर्स के लिए रिकमेंड कर दूं, आपके पास A6100 कैमरा है, आप ऑफिस और रूम्स में बैठकर वीडियोस बनाते हो, then the best lens to have with you is the 50mm f1.8. If you are a traveler, आप ट्रैवल करके ब्लॉग्स बनाते हो बाय होल्डिंग कैमरा इन योर हैंड, और इफ यू आर अ लाइफस्टाइल ब्लॉगर who generally create all the vlogs by holding the camera in their hands, then the best lens to have is 10 to 18mm OSS लेंस. सो OSS काफ़ी हेल्प करेगी आपकी, बट ये लेंस कॉस्टली है. ठीक है, ये लेंस कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली है और एक एंट्री लेवल फोटोग्राफर्स के हिसाब से. सो इफ़ यू आर ट्रैवल शूटर, आपको एक ऑल इन वन लेंस में इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि दिस इज़ द ओनली ऑप्शन वी हैव इन सोनी. अदर देन दैट, अगर आप ऑप्शन की बात करो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शन, देन वी ऑल्सो हैव सिग्मा 16mm f1.4 लेंस. सिग्मा 60mm f1.4 की खासियत ये है कि 16mm से हमें काफ़ी अच्छी वाइड कवरेज मिल जाती है, जिससे हम हैंड हेल्ड ब्लॉक कर सकते हैं. दूसरी बात, 1.4 अपर्चर जो है वो बहुत ही ब्राइट इमेजेस वीडियोस को एंटर करने देता है कैमरे के अंदर. अगर आप मान लो कि आप स्ट्रीट पे व्लॉग्स बना रहे हो, अगर आप स्ट्रीट्स पे व्लॉग बना रहे हो इवन एट नाइट, और इफ यू आर क्रिएटिंग वीडियोस इन योर रूम वेयर यू हैव जस्ट रेगुलर लाइट्स ऑन, this lens will going to help you a lot. Sigma 16mm f1.4 is just an amazing lens. इसकी बोखे बहुत ही अच्छी आती है. So if you are not interested in 10 to 18mm lens, if you think it's too costly, अगर आपको एक किट लेंस से अच्छी अपग्रेड चाहिए, you need a upgrade, but you do not want to invest your money in Sony 10 to 18mm lens, then you should go with the Sigma 16mm f1.4 लेंस. ये बहुत ही अच्छी लेंस है, बट हालांकि ये ध्यान रखना इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो थोड़े ध्यान से आपको वीडियोस बनाने होंगे. एंड दैट्स ऑल वी हैव टुडे. दिस वॉज माई रिकमेंडेशन, द बेस्ट लेंसेज फॉर सोनी A6100 कैमरा. और इसके बाद आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो आप जरूर पूछना कमेंट बॉक्स में, और मैं आपके क्वेश्चन को जरूर आंसर करूंगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू आर न्यू हियर, or do give us a like if you like this video. Thank you very much for watching this.